तुझा माईक आवाज येत नाही. नेहा, आवाज येत नाही तुझा. नाही अजून थोडा लाऊडली येतो. कमी येतो खूप. अजून अजून वाढव. किंवा लाऊडली बोल. लॅपटॉप मध्ये आवाज वाढवण्याचे एक बटन असेल स्टारच्या जवळ. ती थोडं असं 6 नंबरच्या वरती आहे कुठेतरी. ती थोडं पाहून घे. फार कमी येतोय. नाही, फार कमी येतो. हा, नेहा. हा, ठीक आहे. व्हिडिओ सुरू कर तुझं. संविधान फाउंडेशन नागपुर की ओर से मैं रमा कोडात्रे आप सबका आज की संविधान पाठशाला की 9वीं कक्षा में स्वागत करता हूँ। आज 26 जून है। आज राजर्षि शाहू महाराज की जयंती है। यह दिन सामाजिक न्याय दिन के नाम से जाना जाता है। इस अवसर पर हम उन्हें सम्मान और अभिवादन करते हैं। हम इस कक्षा की शुरुआत भारतीय संविधान के प्रस्तावना पढ़ने से करेंगे। इसके लिए मैं संविधान फाउंडेशन की युवा टीम से नमा कोब्रागड़े को इनवाइट करती हूँ। नमा, आवाज येतोय का? We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Jai Bhim. आज संविधान पाठशाला में हमारे राष्ट्रपति द्वारा डॉक्टर तुलसी रोगी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित देश के 6 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से ये मानद उपाधि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध चिकित्सा शिक्षा विशेषज्ञ और प्रसिद्ध डॉक्टर वेद प्रकाश सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, आपके और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए सभी दर्शकों की जानकारी के लिए मैं संविधान फाउंडेशन और संविधान की पाठशाला के बारे में कुछ डिटेल्स बताना चाहती हूँ। सर, संविधान फाउंडेशन यह एक नॉन प्रॉफिटेबल, नॉन रजिस्टर्ड, नॉन पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य स्कूली बच्चों, कॉलेज के छात्र, नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी के बीच संवैधानिक मूल्यों, सिद्धांतों और दर्शन का संदेश फैलाना और उनमें संवैधानिक संस्कृति को आत्मसात करना है। हम सभी लोग विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं ताकि इस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं।
2005 में महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिलों के स्कूलों से संविधान जागरूकता अभियान शुरू किया गया था। प्रस्तावना का प्रदर्शन और स्कूलों में दैनिक पढ़ना अभियान 25 नवंबर 2005 को संविधान दिवस भी मनाया गया। These initiatives were most of a kind in the country. सिविल सर्वेंट श्री इज़त खोब्रागडे IAS सर जो तब मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे जिला परिषद नागपुर में, उन्होंने इन कार्यक्रमों की शुरुआत की। इन्होंने संविधान ओळख अभियान के नाम पे जब सीओ थे तब ये कार्यक्रम की शुरुआत किए थे। We as a Sanvidhan Foundation followed up with the state and central government and as a result इस अभियान को 2008 और 2013 से महाराष्ट्र राज्य के सरकार के द्वारा रेप्लिकेट किया गया था और भारत सरकार ने इसे 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यपत्र अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रव्यापी बना दिया। इस संविधान जागरूकता के लिए अब 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान फाउंडेशन का गठन 2012 में संविधान ओळख अभियान को आगे बढ़ाने और समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए लाया गया था। श्री इज़त खोब्रागडे सर इसके संस्थापक अध्यक्ष हैं। हम संविधान और विधान विज्ञानमाला परिषद सम्मेलन आदि का आयोजन करते हैं। संविधान फाउंडेशन विकासात्मक कल्याणकारी योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति, भूमिहीनों को भूमि अनुदान, बेघरों को आश्रय, बजट प्रावधान और नीति सामाजिक आर्थिक विकास कल्याण योजनाएं और कार्यक्रमों में भी हाथ लेता है। साथ ही समाज में हो रही विभिन्न घटनाओं का वास्तव और परिणाम देश हित के लिए संवैधानिक संस्था, नागरिक और मीडिया का कर्तव्य और जिम्मेदारी इन विषयों पर निरपेक्ष चर्चा हेतु संविधान की पाठशाला का आयोजन हो रहा है। संविधान जागरूकता के लिए हमारी एक कोशिश है। For other guests attending this program, I will give a brief about today's guest, Honorable Dr. Prakash Gupta sir. Sir, he is presently a national head of the academic program with Indian Program UNESCO Chairman Bioethics is an illustrious member of the medical fraternity, well known not only in India but also overseas. A dynamic orator, he is a keen academician and an astute administrator. Born in Nagpur and educated with an MD degree, he seemed to life path to equip himself by completing Master of Industry Relations and Personal Management and Bachelor's in Journalism as well. He got with the highest academic distinction of PhD honorary cause by 6 health sciences universities in the country with recognition for selfless services to the cause of medical education of consequence and relevance of the national and international level. He has held the August office of the Honorable Chancellor of Krishna Institute of Medical Sciences, Karat, for a full term of 5 years, with along from 2014 to 2019. His association with the Medical Council of India in various capacities has been well over 3 decades, where he held prestigious positions as Chairman of the Postgraduate Medical Education Committee, Chairman of the Finance Committee, Member of the Executive Committee, Chairman of the Academic Committee, and several others. He has the distinction of being recognized as Professor of Emeritus, Professor of Eminence, and Professor of Excellence with 5 health sciences universities in the country. He is holding the office of Pro Chancellor cum Chief Advisor of Ratnamani Institute of Medical Sciences, Nagpur, and also renders his services as Honorary Director, Center for Health Professional Education Policy and Planning. Dr. Mishra sir functions at multiple higher designations with several organizations and is a consultant editor for the World Team at the American Biographical Institute, US. He has been a pioneer in involving postgraduate degree courses curriculum as a chairman of postgraduate medical education committee to the Medical Council of India, New Delhi, as well as in the integrated competency based undergraduate medical education curriculum and launching the National Faculty Development Program for full-time teaching faculty of the medical schools in the country. He is an honorary advisor to the National Indian Medical Association and chairman of the Standing Committee of Medical Education with its headquarters
has to most dreaded unique distinctions like youngest ever teaching member on the Senate of Nagpur University, youngest ever dean of Nagpur University, member of expert committee on financing of health education, Central Advisory Board for Education, and he has been elected to Senate Academic Council for a number of terms. Dr. Mishra sir is the recipient of well-known 100 prestigious national and international awards in recognition of his selfless service to the cause of higher education in general and medical education in particular for well over 3 decades, and his fate is on the endless line. His creative work, notable achievements, and unparalleled contribution is acknowledged not only in the country but also with the global population. His father, Sri Ganga Prasad Ji Mishra, has sketched his biography of his beloved son, Dr. Dev Prakash Mishra, giving it heartwarming title, Dream Courage, a distinctive piece of biographic literature that has been included in the Limca Book of World Records as the only biography of a notable son penned by his father, and in the Unique World Records under the caption, the only biographical sketch of an illustrious son by his father. Indeed, he is an apostle of the thought order. So today's topic is constitutional morality, संवैधानिक नैतिकता. बाबा साहब जब कानून मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि संवैधानिक नैतिकता संविधान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है. दिखाई कक्ष में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, यदि सरकार की संसदीय प्रणाली को सफल बनाना हो तो जनता और सरकार दोनों को संविधान की कुछ नैतिकता या परंपराओं का पालन करना पड़ेगा. उन्होंने कहा था कि उन्होंने लोगों के संबंध में ये कहा था कि मूल तत्व है सरकार के रूप का सम्मान, कानून का पालन, स्वतंत्र सोच की आदत और बहुमत शासन का पालन. इसी तरह सरकार को भी बहुमत का विश्वास, अल्पसंख्यक के प्रति सम्मान और निष्पक्ष प्रशासन का विश्वास खो देने पर शांतिपूर्वक सत्याग्रह इच्छा की संवैधानिक नैतिकता का पालन करना चाहिए. उन्होंने आगे कहा था, संविधान विफल हो गए थे क्योंकि इनका संवैधानिक नैतिकता से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये समाज की रचना करने के लिए विभिन्न तत्वों के विचारों, तरीकों और अंतर संबंधों के संदर्भ में बिना सिद्धांत के आधार पर बनाए गए प्रकाशित चीजों हैं. Sir, I once again welcome today. You are our eminent guest, and I request you to speak on today's topic, constitutional morality, संवैधानिक नैतिकता. Over to you, sir, please. Thank you very much, Neha, for your kind, liberal words. My learned, esteemed brother, respected E.Z. Khobragade-ji, all the members associated with Samvidhan Foundation, and all my learned brothers and sisters who have joined today on this virtual mode of dispensation, which in the rubric of Samvidhan ki Pathshala, Kramank 9, I am trying to place across on a very vital and significant theme, the constitutional morality. Before I embark on what I am wanting to propound, I would like to record my sincere sense of appreciation to my learned brother, Shri E.Z. Khobragade, who has not only espoused a cause, but has set out himself as a living, exemplary example of commitment to the cause of awareness of the most holy book of free India, the Constitution of India. Therefore, I pay my salutations to my learned friend E.Z. Khobragade. संविधान महज एक पुस्तिका का नाम नहीं है. भारत का संविधान केवल एक दस्तावेज अगर होता तो इसके ऊपर में अनेक प्रकार के संदर्भ और औचित्यों की चर्चा लाजमी है. भारत का संविधान एक डायनामिक डॉक्यूमेंट है.
भारत का संविधान अपने आप में गतिशील, चलायमान और अत्यंत प्रामाणिकता के साथ सामाजिक संवेदनशीलता को स्पर्श करने वाला ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट है। इसलिए भारतीय संविधान की जब हम मीमांसा करते हैं तो जिन संदर्भों के लिए, जिन औचित्यों के लिए, जिन नीतिमंत परंपराओं के लिए और जिस सांस्कृतिक दुश्वारियों पर मात प्राप्त करने के लिए भारतीय संविधान की संरचना हुई, जब तक हम उस नीतिमत्ता और मूल्य स्थापत्य के स्वरूप को अंगीकृत और स्वीकृत नहीं करेंगे, विश्वास मानिए भारतीय संविधान को न हम समझ पाएंगे, न भारतीय संविधान की पहचान को हम स्वीकार कर पाएंगे। When I'm making this statement, ladies and gentlemen, it's not an accidental thought that I am wanting to put across. I would like to quote specifically on 4th of November 1948, when the chairman of the drafting committee, great Dr. B.R. Ambedkar, placed before the Constituent Assembly the draft Constitution of India. ऐतिहासिक दिन 4 नवंबर 1948, मसूदा समिति के अध्यक्ष के नाते उन्हें संविधान का मसूदा जब संविधान परिषद के सामने रखा और उस समय उन्होंने एक ऐतिहासिक प्रारंभिक सूत्रधार के रूप में व्याख्यान किया है संविधान परिषद में। और उस पूरे व्याख्यान का मैं समझता हूं कि मैं नहीं समझता कि संविधान की व्याख्या, व्याप्ति, संविधान के संदर्भ, संविधान के औचित्य पर इससे बेहतर कमेंट्री उस व्याख्यान के अलावा दुनिया के अंतर कभी किसी को पढ़ने को मिलेगी। परंतु अपने उस व्याख्यान में मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, उन्होंने एक अंग्रेजी दार्शनिक जॉर्ज ग्रोट को उनकी ऐतिहासिक पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ग्रीस इससे कुछ उद्धृत करते हुए कहा, और तब पहली बार शब्द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का संविधान परिषद के अंतर्गत मसूदा रखते हुए जो डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने, कोटिंग फ्रॉम द फेमस बुक हिस्ट्री ऑफ ग्रीस written by George Grote, what did he postulate in the context of dimensions which were put across by on constitutional morality by him? He said, in the Indian context, when we are wanting to take up drafting of a constitution for this country, we cannot be oblivious to the differentiations, the demarcations, the exploitations, the absolute huge degree of human exploitation of worse nature, and the cultural demarcations which have resulted in huge gigantic deprivation over a period of centuries together, resulting in people living not only in stark nakedness and poverty, in illiteracy, dogma, faith and belief, but also required to be leading lives which is not just of an underprivileged, but which is something which is even less than even an animal life. How does this reality can be sustained? How the country should be in a position to come out of it? How these socio-economic plaguings, which are resulting in such a gross degree of disparity, how this is going to be tided over? And then he said, meager enactment of clauses will never be in a position to ameliorate this. It is mandatory that we need to work out a form of government with these objectives, but matching it with a form of administration for mitigation of the same. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का उल्लेख डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जॉर्ज ग्रॉट को कोट करते हुए इन दो दूरस्थ दूरियों के बीच में एक बैलेंस स्थापित करने के लिए, सो दैट द लार्जर सोशल गुड, द लार्जर पॉलिटिकल गुड, द लार्जर इकोनॉमिक गुड, एंड अल्टीमेटली सेइंग द लार्जर ह्यूमन गुड stands delivered to the weakest of the weak, poorest of the poor, and remotest of the remote. This is exactly what is the ethos or what is the Ambedkarian view of constitutional morality, which he propounded before the Constituent Assembly on 4th of November 1948. I take that as a benchmark. As the architect of the Constitution he was, as the principal author of the Constitution of this country he was, it is his version which I take as
the ground version for the purposes of identifying as to what are the contours of constitutional morality, what are the objectives of constitutional morality, and what exactly is the ambit of constitutional morality. Ladies and gentlemen, it is imperative for us to view the entire perspective of constitutional morality in the context of what is designated as social morality. I will give you a classical example. Sati Pratha, perhaps the most non-dignified pratha, in the name of cultural ethos of this country, in the name of public opinion of this country, in the name of public acceptance of the country. Is it sustainable in a civil society was $1 million question. Balancing of these two. Therefore, enactment will only be in a position to prohibit. But generating a public perception which was standing for sati, to be condemning it to be inhuman, to be condemning it as if it is absolutely a sacrifice and sacrilege of the woman and womanhood. It is an indignation which is heaped on the womanhood. It is an insult which is put on the feminine human life. It is in that context. The prohibition clause could be the letter in the constitution, but the social perception ethos, blending it with social morality and bringing out an alteration it, according to Ambedkar, is the ambit of constitutional morality. It is these historic contexts, it is these cultural moorings, it is these discriminations so rampant in the society, maybe in the name of caste, color, creed, religion, faith, belief, sex, gender, whatnot. Annihilation of the same ultimately contemplates the ambit of constitutional morality. But yes, word constitutional morality, Khobragade Sahab, in the entire constitution, there is no word called as constitutional morality worded in the name of constitutional morality in the entire frame of constitution. And therefore, I put this as silences in the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कुछ मुकाम ऐसे हैं जो शांत है, खामोश हैं, और इसलिए भारतीय संविधान की खामोशियों का जब जिक्र होगा तब उसके अंतर्गत बसने वाली खामोशियों में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का भी एक संदर्भ हमें स्पर्शित करना होगा. आप भारतीय संविधान की पूरी चिकित्सा वर्ड वाइज करके देखिएगा खोबरागड़े के साथ. मोरालिटी ये शब्द पूरे संविधान में केवल 4 बार आता है. बाबा साहब द्वारा रचित एज अमेंडेड टिल डेट इस संविधान में मोरालिटी ये शब्द केवल 4 बार उल्लेखित है. मोरालिटी ये शब्द आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में उल्लेखित है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में उल्लेखित है, आर्टिकल 25 सब क्लॉज 1 में उल्लेखित है और आर्टिकल 26 में उल्लेखित है. इसके अलावा मोरालिटी ये शब्द भारतीय संविधान में कहीं भी आप उद्धृत नहीं कर पाएंगे. दूसरा महत्व का मुद्दा जो मैं इंगित करना चाहता हूं वो ये कि इन चारों जगह पर, बी इट आर्टिकल 19(1)(a, बी इट आर्टिकल 19(1)(c, बी इट आर्टिकल 25(1) and be it article 26, the word morality invariably has been availed in these 4 articles of the constitution in the context of public order, and this is the important aspect which has to be taken in mind. And therefore I am of this opinion that word morality put across in these 4 important articles, although is worded as word morality in the context of public order, in the real essence, to me, they stand as the explicit contours of constitutional morality in the constitution. And therefore, I am tempted to quote certain historical parables. Keshwananda Bharati pronouncement made by the Honorable Supreme Court. What was the doctrine which came to be postulated? The doctrine which came to be postulated in my humble understanding as a learner of the constitution of this country was basic structure of the constitution doctrine emerged out of it. And therefore, till date, one of the landmarks which has been upheld as a matter of sacrosanct sanctity is a constitution amend होऊ शकेल. कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये अमेंडमेंटची पूर्ण मुभा आहे.
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करण्याची पूर्ण मुभा आणि पूर्ण व्यवस्था त्या संविधान मध्येच अंतर्भूत आहे. पण या अमेंडमेंट मध्ये जे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आहे ते अमेंड होऊ शकत नाही. दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पण त्यावेळेस बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक्सप्लिसिटली एमर्ज झालं. पण कॉन्स्टिट्यूशनल मोरॅलिटी त्यावेळेस न उत्पन्न झालेला डॉक्ट्रिन आहे हे आपल्याला लक्षात ठेवावं लागेल. इट हॅज नॉट बीन जनरेटेड देन अँड देअरफॉर practically from Keshwanand Bharati case till date, till 2018 or certain other judgments, the doctrine of constitutional morality you do not find explicitly articulated or interpreted. But the real essence of constitutional morality has to be viewed in the context of certain important parables, which I would like to bring out very clearly to it. Dr. Ambedkar contemplated that discrepancies in the society have to be balanced. And that balancing is possible only by a judicious balance between the form of the government and form of the administration. Without this judicious balance, whatsoever be the entailments in the constitution, without this balance, the executional part of it, the actualization part of it, it will not materialize on the ground, and therefore constitution will remain only a book compiled in the form of pages without it being actualized in reality. And therefore, it is imperative that the constitutional morality which he was wanting to put across, it has to be subjected to certain morality tests. What will be the tests of morality? And they have been worked out. If you take two important judgments pronounced by the Honorable Supreme Court in regard to the powers and jurisdiction of the Lieutenant Governor in a historical petition which came to be decided between Delhi government and government of NCT versus Union of India, the constitutional morality in the context of morality tests have been defined, have been put across. Second important landmark judgment of 2018, the judgment which has been given in terms of cultural restrictions and social restrictions on Sabarimala temple entry of women between the age of 10 to 50 years, turns out to be another important judgment, Dr. Khobragade, where constitutional morality has been picked up. In that judgment, if I am tempted to quote Honorable Justice D.Y. Chandrachud, he made two important dimensions which need to be taken note of. And according to me, that is the essence of constitutional morality. He said, and I am tempted to quote, we need to decide for ourselves as to whether we will be governed by rule by law or rule of law, quote unquote. Rule by law could be social morality, which may be prejudicial, but then rule of law is what is contemplated by the Constitution. And therefore, there is a possibility that the social morality may not be conducive to all. Sati Pratha is one example which I gave. Various imposable restrictions contemplate a situation where a lady who was widow, she was considered as a stigma. She was not entitled to be there present in any pious or pure situations. Absolutely, and therefore leading an absolutely vegetative life, redundant in character, subjected to humiliation and indignation, even non-vegetative life not being permissible to her. If this was the level of indignation, it was an accepted reality by the society. It was a social morality which was propagated by society. But this is something which is not acceptable to law in the context of Section 15, subsection 2, equality, no differentiation, no demarcation attributable, read with the fundamental rights incorporated in the various articles incorporated in Chapter 3 of the Constitution. They have to be paramount. They have to be supreme. And in the supremacy of that, this social order, this social morality, whether it is required to be held as it is, or it will have to be tackled in the name of what he puts across as constitutional morality. And it is in this context, ladies and gentlemen, the four important morality tests which came to be put across in that judgment, they have to be taken note of. And surprisingly, what Dr. Ambedkar had postulated,
which many people thought that whether it is a real part of the constitution or not. Morality tests are inbuilt into the value ethos, which has been incorporated in the preamble of the constitution itself. And that's exactly the propagation which has been put across by Samvidhan Foundation. What is the significance of preamble? What is the purpose of preamble? वो केवल एक प्राकथन नहीं है, वो केवल एक प्रोलोग नहीं है, वो केवल एक शुरुआत का वर्णित सत्य नहीं है, वो केवल एक तथ्य का विवेचन नहीं है। भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान का केंद्र बिंदु, भारतीय संविधान का स्वरूप, भारतीय संविधान के अस्तित्व का क्षण, भारतीय संविधान की अस्मिता का चिंतन और भारतीय संविधान की उपलब्धता का प्रमेय अगर कहीं बसा हुआ है तो विनम्रता से मुझे कहने दीजिए भारतीय संविधान के प्रीएम्बल के अंतर्गत बसा हुआ है। इसलिए संविधान के अंतर्गत बसने वाले मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के टेस्ट क्या हैं? 2018 का जजमेंट ऑनरेबल जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ जी के शब्दों के अंतर्गत मैं कहूं तो उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा, द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पुट अक्रॉस एज अगेंस्ट social morality, which otherwise is palpably and evidently prejudicial, it is imperative that constitutional morality has to prevail over social morality, and the duty does not stop there. That this duty has to be dispensed to the prudent society for the purposes of alteration of the perception for the morality tests which are embedded in the value ethos in the preamble of the Constitution of India itself. And therefore, what are the morality tests? पहला morality test है test of liberty, दूसरा morality test है test of equality, तीसरा morality test है test of justice, and चौथा morality test है test of fraternity. These are the four tests. Anything which is prejudicial to any one of these value ethos, explicitly or implicitly, directly or indirectly, it is neither upholdable nor it is permissible, and therefore the validity, the scope, the ambit of the constitutional morality lies in realistic, meaningful, cogent, credible extension of value ethos of the constitution, and the morality test will be test of extension of liberty, test of extension of equality, test of extension of fraternity, and test of extension of justice. These are the important morality inclusions and morality tests which emerged out of that. And therefore, I am tempted to quote what exactly are the coverages which can be put across in the name of constitutional morality, beginning from the famous depictions which have been brought by George Grote, interpreted in the Indian context by B.R. Ambedkar, doctrine of basic structure incorporated in Keshwanand Bharati's case, basic tenets of the constitution not open for amendment, incorporated by the famous landmark justice, the landmark judgment listed by the bench headed by the then Chief Justice of India, Honorable P.N. Bhagwati. Later on, certain parables of constitutional morality, which in my humble opinion have been primarily enunciated in relevant details in Delhi Government versus Union of India case and the Aitihasik Sabrimala case. They bring out what exactly can be said to be the ambit inclusions of constitutional morality. And they are, number one, preamble of the constitution itself. Number one. Number two, what day I am talking today on this topic so accidentally, but I am proud of it. Today is Rajarshi Shahu Maharaj Janmatithi. I am speaking on this topic. Kobragade Sahib, I am grateful to you. What a day you chose and what a time you chose to be blessing me with this opportunity of speaking on this topic on such an auspicious day. Today is Social Justice Day, and the test of morality is preamble number one, social justice number two. Second important criteria within the ambit of constitutional morality is social justice. Third, right to equality. Fourth, individual liberty. Fifth, due process of law. And sixth, freedom of choice and expression. These are the non-compromisable, and therefore the English phrase which goes, things are not only required to be executed in letter, they are required to be operational execution in spirit as well. The constitutional morality, this word may not be in the constitution in terms of its explicit wording,
But if you read the entire constitution in terms of 6 important cardinal parameters: A, the preamble; B, the social justice; C, the right of equality; D, the individual liberty; E, the due process of law; and F, the freedom of choice and expression. What pervades amongst all these 6 value ethos is the tenets of constitutional morality. And therefore, these are the real tenets which can propound the doctrine of constitutional morality as a whole. In this connection, I think I will be failing in my duty if I do not bring to your notice that it was not just the value ethos which was put across in a single parable. When Dr. Ambedkar contemplated guaranteeing justice, he did not stop it there. Justice could have meant anything and everything. But then the wordings which have been put across as supplement which qualify justice is what justice? Justice which is social, justice which is economic, and justice which is political. There are 3 arms. You can be granting justice socially, but that social justice necessarily may not amount to political justice. You may be granting political justice, that may not amount to social justice. You may be granting social and political justice, but that may not amount to economic justice. Justice in an isolated form of being only social in character, half-hearted; only political in character, bankrupt; only economic in character, nonsensical. But a judicious balance of equity and equanimity in the realm of justice, which is social, political, and economic, is the real tenet of justice, and this is constitutional morality. Political justice in this country, Dr. Ambedkar evoked with a stroke of the pen. One man, one vote, one value. Political inequalities were wiped out. One small little stroke of pen. Political equality was established in terms of right to vote. Independent of the status of the person, the value of the vote was brought down to a commonality. साधारण से साधारण आदमी के वोट की कीमत वही जो इस देश के प्रधानमंत्री के वोट की कीमत. This is political equality brought out by the constitution. But this political equality did not guarantee social equality. This political equality did not guarantee economic equality. And therefore, when we are talking of the constitutional morality, it is a trinity of justice which has to be social, political, economic, and it is not only that it has to be just, but it has to be equitable too. It has to be accessible too. It has to be available too. It has to be affordable too. These are the various operational tenets which ultimately will go to define as to what it is. And therefore, again, I am tempted to quote a famous quote which has been drawn from a landmark judgment which has been given by the British judiciary. And it says, "Let heavens fall, but justice has to triumph." And this is the balancing between what should prevail, social morality or political morality or constitutional morality. And the word, and I'm wanting to put across in one phrase, which I'm able to find the entire coverage of constitutional morality. Let heavens fall. It would not make a difference, but justice has to triumph. And that is the absolute ethos that we are wanting to be putting across to the entire cardinal values which have been incorporated within the doctrine of constitutional morality. I am tempted to again bring to focus what the former retired Chief Justice of this our Honorable Supreme Court, Honorable Justice Deepak Mishra, retired, has quoted in regard to constitutional morality, which I take as a substantially benchmark interpretation. He went on to say that when we are talking of constitutional morality, it has to be viewed on 4 important contexts. And they are: A, individual autonomy and liberty. That is the first important touchstone. 2, equality sans discrimination of any type. 3, recognition of identity
with dignity. And 4, right to privacy. Ladies and gentlemen, I am wanting to put all this across only to bring into focus that constitutional morality principle, which is a part of absolutely constitutional silence, that which has been reverberating in terms of opening interpretation in the Indian context, put across by legendary Dr. B.R. Ambedkar. That legendary doctrine, which could not get echoed along with the doctrine of basic structure for whatever reasons. That doctrine, which even today is not acceptable to n number of the people for n number of reasons, because even if you take into consideration the doctrine of constitutional morality, after Sabrimala case, it was referred to a 7 judges bench, and thereon now it has been, and it is even today under consideration before a 9 judges bench which has been constituted for the said purpose. And therefore, to say that we are totally evolved in the context of as to what exactly the interpretative jurisdiction of doctrine of constitutional morality would be, perhaps a final word is still awaited. And therefore, on this topic, I was wanting to go in for collaging of the situations, which as a learner, as a student, as a humble student of the Constitution of India, I was trying to collate, I was trying to collage. And therefore, what I am wanting to put across with absolute degree of understanding at my disposal is, what was the reason? You please go through Section 377, included in the Indian Penal Code, about the homosexuality. It has been struck down. And the reasons for striking down, read in the judgment. The cultural moorings at one end, the cultural ethos at one end, the social morality propagated at one end, weighed against the equality, weighed against equity, weighed against individual privacy, weighed against individual liberty, weighed against the individual ethos of the fundamental rights accruable and guaranteed to the citizen, weighed against the 6 cardinal principles which go to constitute the tenets of constitutional morality, including 4 dimensions, which included right to privacy, brought out by Honorable Justice Deepak Mishra in the entire depiction on the said count. Article 377 came to be struck down, and it was struck down from the IPC. This by itself definitely goes to work out that there is a required trend which has to be generated, which has to be deciphered, which has to be strengthened, which has to be postulated in operation in terms of what we can say as doctrine of constitutional morality. Dr. Ambedkar very categorically said that howsoever good and effective the book of the Constitution be, people will not have faith in it until and unless the fruits thereto become accruable to one and all. Until and unless it is expected to make the desired difference for which it is intended, it will never be in a position to live its own course. It will remain only a document on pages. What exactly is that which is capable of converting a document on pages into an acceptable reality by the men and mankind in terms of extension in their day-to-day lives? And that is the doctrine of constitutional morality. It is the extension of liberty. It is the actualization of the guarantee pertaining to justice. It is a guarantee which is pertaining to fraternity. It is the guarantee which is pertaining to equality. Actualization of this guarantee, ladies and gentlemen, actualization of the concept of welfare state as enshrined in the Constitution is the entire contour, in my little humble understanding, is the mandate of constitutional morality. And therefore, I am tempted to include 2 more words when I am talking of constitutional morality. Constitutional morality will be incomplete to decipher if we are not in a position to decipher as to what constitutional propriety is. There may be many proprietors of the Constitution, but proprietors need to understand what is the propriety of the Constitution. And the third, morality and propriety will be meaningless if there is nothing, if there is something which is devoid of what is called as a constitutional sincerity. Sincerity to the Constitution, commitment to the Constitution,
allegiance to the Constitution, upholding the Constitution, not only in letter, but in the real spirit of it. Actualization of the preamble of the Constitution, actualization of the value ethos in the Constitution, actualization of transforming the form of the government along with the form of administration, which Dr. Ambedkar contemplated, quoting George Grote, that this is constitutional morality. Society has been plagued by cultural immorality, and therefore this can be annihilated not by lip sympathy. The annihilation of a cultural immorality has to be by a constitutional morality, which is not expected to be only a small time ointment, but a radical care for a radical cure. Care to cure is the dimension of constitutional morality. And therefore, it is in this context I view the entire concept of constitutional morality not as a phrase. It has its historicity. It has its reason. It has its logic. It has its interpretation. It has its relevance. It has its impact, and it has its own consequence. Of course, any interpretation in any context in a diverse society, ultimately, when you are talking of fraternity, is it possible for you to have fraternity in the realistic sense without contemplating an inclusive society? An inclusive society is the only answer. And as long as there will be threat, as long as there will be an onslaught onto the inclusive nature of the society, take it for granted. In the name of social morality, non-inclusive society, the mandate of inclusive society, therefore, is constitutional morality. It is in this context, ladies and gentlemen, the things are required to be looked at. They have to be looked at dispassionately. They have to be looked at without any biases. They have to be looked at without holding any sides. They have to be looked at, and ultimately, when you are talking of Sabarimala case also is talking of constitutional morality only in the context of Article 25(1) and Article 26 of the Constitution of India. Frankly speaking, the nature of the word morality depicted under Article 19(1)(a) and 19(1)(c), even today, I am not able to find. Maybe my limitation, as I said, I am not a law expert. I am not a legal brain. Law is not my arena of profession. But yes, like Kobragade, I am a committed learner of the Constitution of India because I take that as my identity. I take that as my holiest book. I take that as my meaning of life. I take that as my purpose of life. I take that as the all and end all of my life, because I owe my existence to the Constitution of this country. Therefore, this Constitution that we are talking about, it has to be holier than thou. It has to be the most sacrosanct document. It has to be a totally upholdable document. It has to be not only lived in letter, it has to be lived in actualization of the spirit too. And if the spirit of the Constitution today is required to be absolutely manifesting in a realistic sense, it is imperative that we have to uphold what Dr. Ambedkar contemplated as constitutional morality. There will always be a conflict between constitutional morality versus social morality, because social morality will have conveniences, social morality will have leanings, social morality will have moorings, social moralities will invariably result in denigration of the some and propagation of the other. In that context, the value ethos of liberty, the value ethos of equality, the value ethos of fraternity, and the value ethos of justice, if that is to reverberate, then I am, as a learner of the Constitution, have no hesitation in saying that in all such situations and scenarios, the only answer is constitutional morality has to prevail at all and every cost. That's from my side, humbly for consideration of all concerned. Whatever little I was able to collage and decipher as a learner of the Constitution, if there are any omissions, I take the responsibility of. If there are any gaps, it is my paucity of understanding and my paucity of rationalizing. But this, my limited understanding, does not dilute the ever reverberating human ethos and human dimension in the form of constitutional morality, which Dr. Babasaheb Ambedkar categorically enunciated, as I quoted, on the 4th of November 1948 itself. Let those sounds echo in all corridors of power.
for a realistic socio-economic and political transformation of India, converting it into a real, cogent, credible welfare state where demarcations as catalogued in the Indian Constitution in terms of a guarantee not to be discriminated on the basis of gender, sex, caste, color, creed, faith, belief, trade, calling, order, profession, vocation, and geographic location. This was the dimension which Dr. Ambedkar defined. No constitution has illustrative definition of differentiation and demarcation. Your and my constitution, by the mercy and grace of Dr. B.R. Ambedkar, has got not an illustrative list of demarcation, but an exhaustive list of demarcation. If this is not constitutional morality, then what is constitutional morality? We will have to ask the hosts only to define the same. Thank you very much, Khobragade Sahab, for giving me this opportunity. And thank you very much, all of you, for patient listening. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir, for sharing your immense knowledge on the topic. You have given me valuable input by quoting related articles, various aspects. It was our pleasure listening to you. Please accept our sincere appreciation for the outcomes you have made towards going forward, I would request founder of Samvidhan Foundation, T.Z. Khobragade sir, to few words in the conclusion of the program. वो हमारे फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड, हमारे संविधान फाउंडेशन के पैट्रन कहूंगा मैं, हमारे मित्र डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा सर, मैं संविधान फाउंडेशन की ओर से फिर आपका बहुत धन्यवाद भी करता हूं, शुरू से स्वागत करके। इतना कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के जो विविध पहलू है वो बहुत ही सरल तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। मैं उसमें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक याद दिलाना चाहता हूं कि 15 साल पहले नागपुर विद्यापीठ के कन्वोकेशन हॉल में वी द पीपल ये टॉपिक पे हम ही लोगों ने एक भाषण रखा था, और तब वी द पीपल का क्या मतलब होता है, व्हाट वी, स्टिल आई रिमेम्बर दैट योर स्पीच। I know you are a learned person, it's very excellent orator and renowned social activist. अगर हम सरल भाषा में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात करेंगे तो मैं एक प्रशासकीय अधिकारी के नाते मेरे अनुभव से मैं यही कहूंगा कि संविधान और कानून का सम्मान करते हुए संविधान को हम कमिटेड होके वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें। तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑर्गन्स है, जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, बाद में हम मीडिया भी कहते हैं, और हम तो सिटीजन हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमारा सारे लोगों का यही काम है कि वी आर कमिटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और फिलॉसफी। जो अभी आपने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपराइटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी वही है। तो मैं और एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2015 में पार्लियामेंट में एक भाषण किया था, और वो टॉपिक भी यही था। एक स्पेशल सेशन 2 दिन का हुआ था, जबकि देश में कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को डिक्लेयर किया था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की वो 125th बर्थ एनिवर्सरी थी, और उपलक्ष्य में और संविधान की उपलक्ष्य में पार्लियामेंट में कहा था। तो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कमिटमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक पे कि हमें ये संविधान यानी लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो आज अगर हम समाज में देखेंगे तो सही में अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि संविधान लोगों को जोड़ता है, सही है, प्रिंसिपल के हिसाब से जोड़ता है। वास्तव में क्या लोगों को जोड़ने का काम भारत सरकार और राज्यों की सरकारें और उनके प्रशासन के लोग सही में ईमानदारी से कर रहे कि नहीं, इसका भी चिंतन मुझे लगता है
करना पड़ेगा अगर हम इफ वी आर रियली कमिटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल। तो मुझे लगता है कि जो समाज में और व्यवस्था में जो करप्शन है, जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो समाज का जो पीछे जो वर्ग रह गया है, उनके लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करने की जरूरत है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों को समझाने के पहले हमें प्रशासन के लोगों को समझाने की बहुत जरूरत है। हमारा गुड गवर्नेंस हम तभी ला सकते अगर हम इफ वी आर कमिटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का यही मतलब आहे की संविधानाशी बांधिलकी ठेवून काम करायचं, म्हणजे कायद्याशी बांधिलकी ठेवून काम करायचं, कायद्याचा आणि संविधानाचा सन्मान करायचा। आणि आमचा जो मूलभूत कर्तव्य आहे त्या मूलभूत कर्तव्यातलं पहिलं कर्तव्य तेच आहे की संविधानाचा सन्मान करणे, संविधानाच्या ज्या संस्था आहे त्याच्याशी त्याबद्दल आपल्या मनामध्ये एक प्रेम असलं पाहिजे। आणि कायद्याबद्दल जो है जैसा आपने कहा कि यस इट इज ए रूल ऑफ लॉ, इट इज ए फाउंडेशन लॉ ऑफ द लैंड है। तो ये संविधान जागृति का जो उपक्रम हमने 2005 से शुरू किया और संविधान फाउंडेशन के माध्यम से जो छोटा मोटा एक प्रोग्राम करके हम कोशिश कर रहे हैं, एक पहल है हमारी, ये छोटी सी पहल है कि संविधान के जो डिफरेंट फैसेट्स है उस पे बात की जाए और उस पे चिंतन भी किया जाए और समाज में जो अभी जो घटनाएं होती है उसका भी चिंतन किया जाए। और हम देश के नागरिक के नाते हमारा क्या कर्तव्य है और उसी हमें अगर हमें अच्छा समाज और देश को मजबूत बनाना है तो फिर हमारा अपना जो कर्तव्य है उसको निभाने की कोशिश की जाए। सिर्फ संविधान की एक पहलू पे ही चर्चा नहीं तो जो वेलफेयर स्कीम है, डेवलपमेंट प्रोग्राम है, अभी जो अगला सेशन या आने वाले सेशन में कुछ एजुकेशन और एजुकेशन के लिए जो स्कीम्स है और जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की स्कीम है, अभी आई एम प्लानिंग कि नेक्स्ट सेशन हम स्कॉलरशिप पे लिया जाए कि बच्चों के लिए जो यूथ है उनके लिए और जो अलग अलग सरकार के प्रोग्राम है उसमें नॉट टू जस्ट ब्लेम द गवर्नमेंट और द एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन उसमें जो कमियां है मुझे लगता है कि हम अपने अनुभव के आधार पर और जो भी स्टूडेंट या जो नागरिक जो फेस करते, जो डिफिकल्टी फेस करते, उसकी भी चर्चा हो। दिस इज जस्ट टू अवेयर द पीपल अबाउट देयर राइट्स। और मुझे लगता है कि ये काम निरंतर रूप से चलते रहना चाहिए। मिश्रा सर, आई नो यू वेरी वेल और मुझे वो आज भी 15 साल पहले का वी द पीपल ये भाषण मुझे अच्छी तरीके से याद है और तभी मैंने वो उसके जो पहलू है, आई एम एडमिनिस्ट्रेटर, जो प्रोग्राम हमने चलाया स्कूल से प्रियम्बल पढ़ना, लेकिन आप यू आर एक्सपर्ट, आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं कोई संविधान तज्ञ नहीं हूँ, मैं तो एग्जीक्यूशन करने वाला आदमी हूँ। तो मुझे अधिकार मिला तो मैंने एग्जीक्यूशन, मेरे अधिकार का इस्तेमाल करके, जो भी अधिकार मुझे संविधान ने दिया उसका मैंने इस्तेमाल करके बच्चों को हमने प्रियम्बल पढ़ाना स्कूलों से, नागपुर जिले से शुरुआत करी। कम से कम वी द पीपल इस शब्द तो बच्चे पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे कि भाई हमारा देश कैसे होना चाहिए, फिर हमारे लिए क्या है संविधान में, फिर हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे राइट्स क्या है, हमारे वेलफेयर के लिए क्या है। ये प्रोसेस है, ये उसको डेवलप होती जाएगी। और इसलिए हम सरकार से भी हम हमेशा बात करते हैं। आपका नागपुर विद्यापीठ में काफी आपका इन्फ्लुएंस है, आपका काम है, तो ये ओकेजन में मैं आपको रिक्वेस्ट भी करूंगा, मैंने विद्यापीठ के वीसी जो पहले थे वो भी वीसी और अभी 26 नवंबर को नए वीसी के साथ में भी जब संविधान दिन का प्रोग्राम हुआ तो मैंने उनसे अपील की थी कि नागपुर विद्यापीठ भी अपने जो उनके जो अभ्यासक्रम है उसमें अभ्यासक्रम में एक कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान एक अनिवार्य एक विषय को रखा जा सकता है, रखना भी चाहिए और उसका सिलेबस फ्रेम करना चाहिए। तो ये जो बेसिक फैसेट्स है
मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस, जैसे आपने 4 नवंबर 1948 का जो ड्राफ्ट संविधान सभा में बाबा साहब ने किया, तो बाबा साहब ने क्या भाषण दिया, ये भी है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में पहला भाषण बाबा साहब का जो 17 दिसंबर 1946 का हुआ, वो भी पढ़ने लायक है। और आखिरी का भाषण बाबा साहब का जो 25 नवंबर 1949 का जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में हुआ, जो आज भी इतना इम्पोर्टेंट है। मुझे हमेशा लगता है कि ये भाषण हमारे देश के नेताओं को, राज्यकर्ताओं को, बड़े बड़े प्रशासकीय अधिकारियों को समझाने की जरूरत है। मुझे पढ़ लेंगे लेकिन उसको समझना पड़ेगा। तो फिर ये जो अच्छा काम हम कहते हैं, गुड गवर्नेंस कहते हैं, अलग अलग नाम से। अभी महाराष्ट्र सरकार ने अभी एक जीआर निकाला आपके मालूमात के लिए कि सुंदर माझं कार्यालय, बड़ी अच्छी बात है सुंदर माझं कार्यालय। अब मैं भी 29 ईयर्स मैंने प्रशासन में रहा, कार्यालय सुंदर जरूर करो, करना चाहिए। वो दिखने में सुंदरता इनफ नहीं है, तो काम में भी सुंदरता होनी चाहिए। और ये सुंदरता तभी होगी कि आपके कार्यालय में आने वाला जो सामान्य इंसान है, नागरिक है, उसका सम्मान हो, उसका शोषण न हो, कोई उसके साथ बदतमीजी से बात ना करे। उसके जो प्रियम्बल में डिग्निटी ऑफ ए इंडिविजुअल की जो बात करी है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, उस तरह से उसे सम्मान दे, प्रतिष्ठा दे, कोई करप्शन उसके साथ ना हो, तभी मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय के का काम हो सकता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नागपुर के विद्यापीठ के जो वीसी है, आप जरूर कर सकते हैं कि शायद अगर ऐसा किया तो नागपुर विद्यापीठ ये पूरे महाराष्ट्र में एक पहला विद्यापीठ हो सकता है कि जो एकेडमिक जो है अलग अलग डिसिप्लिन है, उसमें संविधान एक विषय कंपलसरी हो सकता है, उसको पढ़ाया जा सकता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है, लेकिन साइंस के स्टूडेंट है और प्रोफेशनल कोर्सेज के है या और स्टूडेंट्स है जो नहीं पढ़ते, मुझे लगता है अगर वो बेसिक पढ़ेंगे संविधान का, तो जो हमारा भारत का संविधान, हमें संविधान का भारत मतलब न्याय का भारत, जो आत्मनिर्भर भारत तो तभी बनेगा कि जैसे आपने बात की इंक्लूसिवनेस की जब बात आएगी तभी बन सकता है। और ये प्रयास हम कर रहे हैं, आपका साथ रहेगा, आप हमें गाइड करिए। विद्यापीठ को ही नहीं तो चांसलर या मेडिकल कॉलेजेस में संविधान को पढ़ाया जा सकता है। लेट देम अंडरस्टैंड व्हाट द बेसिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मुझे लगता है कि संविधान का जागर, संविधान की जन जागृति एक राष्ट्र निर्माण का ये काम है, और ये काम हम सब मिलके करते रहेंगे। और इसी यही उद्देश्य हमने एक संविधान की पाठशाला, संविधानाची शाळा हा उपक्रम आम्ही सुरू केलेला आहे। आठवड्यातून एकदा एक मान्यवर व्यक्ती बोलावून वेगवेगळ्या विषयांवर त्याची चर्चा करायची आणि लोकांमध्ये संविधानाबद्दल जागृती करायची। मी संविधान फाउंडेशनच्या वतीने डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा सरांचा मी परत आभार मानतो। आणि हा कार्यक्रम मध्ये माझी मुलगी आहे ती इंडोनेशियाला आहे, नेहा खोब्रागडे, शी इज कंडक्टिंग फ्रॉम इंडोनेशिया, शी इज ऑन डेप्युटेशन देअर स्टेट बँक ऑफ इंडिया। I must thank her also, she conducted the program very well। आणि त्याचा आवाज कमी येत होता, पण आपल्याबद्दलची जी माहिती तिने सांगितली, प्रियांबल माझी दुसरी मुलगी आहे, ती प्रियांबल तिने वाचलं नमा खोब्रागडे। आणि डॉक्टर प्राध्यापक महेंद्र कुमार मेश्राम यांनी या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं, मी त्यांचे आभार मानतो। आणि परत जे व्ह्युअर्स आहेत, जे पार्टिसिपेट झालेले आहे या संविधानाची शाळामध्ये, त्यांचे मी मनापासून आभार मानतो। आणि पुढचा जो आमचं सेशन होणार आहे पुढच्या शनिवारी किंवा त्याच्या पुढच्या दर शनिवारी होईल, तर त्यामध्ये आम्ही शिष्यवृत्ती, फ्रीशिप आणि वेगवेगळे जे मुलांचे विषय आहेत त्याबद्दलची एक ज्याला म्हणू आपण इंटरॅक्टिव्ह सेशन, अशा पद्धतीचे आम्ही ते आयोजित करणार आहोत। मी परत डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और ऐसे आपका साथ रहिए, आप हमें समझाते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू एवरीबॉडी। और राजश्री शाहू महाराज को अभिवादन, बाबा साहब को भी अभिवादन। आप आए, हमारे एक फोन पे आए और आपने
बहुत अच्छी तरीके से मार्गदर्शन करा। जो चीजें हमें नहीं मालूम थी वो आपके इस स्पीच से हमें मालूम पड़ी। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थँक्यू नेहा, गॉड ब्लेस यू. मग मी ओळखलं ती म्हटलं तरी मी म्हटलं समजून घेतो. व्हेरी गुड. थँक्यू व्हेरी मच. ओब्लाइज. गॉड बी काइंड टू यू. गॉड बी रिअली. राईट कोपराकडे सर. थँक्यू. थैंक यू।